Good morning, students. Today we are going to start the first online class in English, and the first chapter is All Things Bright and Beautiful. And this poem is written by C.F. Alexander. So C.F. Alexander means Cecil Frances Alexander. She is a lady poet. She was born in Dublin, Ireland, 1818. So she was a hymn writer and also a poet. So she wants to depict about the poem All Things Bright and Beautiful. The things which is around us is created by God. Now we are going to start the first poem of C.F. Alexander, All Things Bright and Beautiful. We see and enjoy many things around us, such as beautiful sunrise and sunset, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals. तो आम चतुष्पार्श्व आम चतुर्पार्श्व आम जहाँ सब जिन देखुचे से सब को सृष्टि कर भगवान निजे। तो सुंदर सूर्योदय, सुंदर सूर्यास्त, सुंदर गछ फूल, रिवर्स एंड माउंटेन्स, नदी एवं फूल, रिवर्स एंड माउंटेन्स, नदी एवं पहाड़ पर्वत, बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षी एवं पशु मानकु। We smell the fragrance of the flowers and feel the change of the seasons. So we know the change of the season by smelling the fragrance of the flower. तो आमे माने तो फूलर महक को सुंघी तो कौन ऋतुर परिवर्तन होइछि तो ताहा मध्ये आमे जानि पाइबा। तो we have eyes to see all these and lips praise the beauty of the creation. So we are also the gifted of God. God has also created us, and God has given the different parts of our body, and each part of our body has several works. So likewise, God has given us eye to see the creation of the earth, and likewise God has given us lips to praise His creation. So all things bright and beautiful, all creatures great and small. तो आम चतुष्पार्श्व जो सब जिनस गुड़िक अच्छी तो से गुड़िक बहुत उज्जवल एवं सौंदर्यपूर्ण। ऑल क्रिएचर्स आर ग्रेट एंड स्मॉल। तो जिते सब जीव जंतु जहाँ भी अच्छी तो से सब बड़ अच्छी एवं छोट मध्य अच्छी। तो ऑल थिंग्स वाइज एंड अंडरफुल एवं समस्त जिनिस गुड़िक वाइज मीन्स प्रुडेंट विज्ञ एंड अंडरफुल मीन्स आश्चर्यमेंट तो आश्चर्यकर बा विस्मयकर। तो द लॉर्ड गॉड देम ऑल तो यही सब जिनिस को सृष्टि कर भगवान निजे। तो वाइज वाइज मीन्स प्रुडेंट, मीन्स विज्ञ, अंडरफुल astonishment, विस्मयकर, ग्रेट, ह्यूज, बड़ बा महान। So in the first stanza, the poet C.F. Alexander wants to depict about the things which is around us, like all things bright and beautiful, and the creatures are great and small. Means तो आम चतुर्पार्श्व जो सब जिनस आम देखुचे से सब उज्जवल एवं सौंदर्यपूर्ण। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल तो जहाँ भी सब आम जीव जंतु को देखुचे तो से सब किए भी बड़ अच्छी किए भी छोट अच्छी। ऑल थिंग्स वाइज एंड अंडरफुल तो जो सब जिनस गुड़िक अच्छी तो किसी जिनस अच्छी चतुरतार सहित चला एवं किसी जिनस अच्छी देखा आश्चर्यकर बा विस्मयकर।
तो द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, तो यही सब जिनिस को सृष्टि कर भगवान निजे। तो इन द फर्स्ट आंसर द सीएफ अलेक्जेंडर तो describes about the things which is around us. So likewise in the second stanza, each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their teeny wings. So each little flower that opens, O-P-E-N-S, opens means প্রস্ফুটিত হওয়া। প্রস্ফুটিত glowing means bright or shining. उज्जवल, टीनी, स्मॉल, क्षुद्र, wings, a part of the body of birds that can fly. So in the second stanza, each little flower that opens, तो प्रत्येक छोट छोट फूल गुड़िक जो गुड़िक प्रस्फुटित होती, each little bird that sings, तो जो छोट छोट डेणा भगवान ताकू देइचंती जहा माध्यम से सुंदर रापरे गान करी तो आकाश उड़ी उड़ी जाई पारुची। तो ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, एवं सेही फूल मानकू पक्षी मानकू भगवान तांकर विभिन्न प्रकार रंग देइचंती। ही मेड देयर टीनी विंग्स, एवं भगवान ही मीन्स गॉड हिमसेल्फ, तो गॉड हैज गिफ्टेड द टीनी विंग्स टू द लिटिल बर्ड्स, जहा माध्यम रे की तो पक्षीटी सुंदर रापरे गान करी तो आकाश से उड़ी पारुची। तो सो इन द सेकंड स्टैंजा the poet C.F. Alexander wants to depict about the flowers and the birds. So C.F. Alexander wanted to describe when the flower opens, then it smells its fragrance, and God has given the different colors of the flowers. Likewise, God has gifted the different color of the birds, and also God gifted teeny wings to the little bird, in which a bird can sing a song when it fly in the sky. तो भगवान ये सुंदर सुंदर डेणा विशिष्ट पक्षी को तैयारी करचंती एवं सुंदर सुंदर को विभिन्न रंगर विशिष्ट फूल मान को तैयारी करचंती। तो जहा माध्यम आमे which we look steadily and attract us, तो आमे सुंदर फूल गुडी को देखिले आमे आकर्षित हो एवं सुंदर सुंदर पक्षी गुडी को देखिले मध्ये आमे आकर्षित Hey, so in the second stanza, the poet C.F. Alexander wants to depict about the flower and birds. So in the third stanza, the purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. So purple-headed. The rays of the setting sun falls on the mountain
is red. Nilo baiguno. So the purple mountains. Purple means when the rays of the setting sun falls on the mountain top, it makes purple headed. Purple headed means bluish red. तो ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତଗାମୀ କିରଣଟି ପାହାଡ଼ର ଉପର ଭାଗରେ ବା ଶୀର୍ଷରେ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିନେରୀ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସିନେରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ପର୍ପଲ ହେଡେଡ୍ ଦି ରିଭର ରନିଂ ବାଇ ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ଦି ସନସେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ସକାଳର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କି ଆକାଶକୁ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ ତ ହିୟର ଇନ୍ ଦି third stanza the poet C.F. Alexander wants to depict about the sunrise and the sunset at the time of the sunrise and the sunset at the time of the sunrise and the sunset the mountain the sky looks brightens and when the rays of the setting sun falls on the mountain top it makes purple headed. So in the fourth stanza the cold wind in the winter the pleasant summer sun the ripe fruit in the garden he made them everyone. The cold wind means pavana cold means thanda pavana in the winter shito dine प्रवाहित होतुवा जो thanda pavanti the pleasant summer sun तो आनंददायक ग्रीष्म ऋतुर जो खराटी the ripe fruit in the garden तो when we entered into a garden we saw different kinds of ripe fruits आमे जते गोटे बगीचा को पसी जिबा तो विभिन्न प्रकार सब पाचला फल गुड आमे देखिबा he made them everyone तो जते सब जिंस आमे कहिले तो in the ripe fruit and also the cold wind pleasant summer sun all these things are created by God he means God has made them all तो एही सब जिनिस को सृष्टि करछन किए भगवान निजे the tall trees in the greenwood the meadows where we play the rushes by the water we gather every day the tall trees means बड़ बड़ गछ बा लंबा गछ गुडी को greenwood means forest meadows an open area of grassland खुला पड़िया rushes a tall plant like grass that grows near the water side which are used for making mats and baskets
gather means collect. সংগ্রহ করিবা। So in the fifth stanza, the tall trees in the greenwood. When we went to a forest, we see or one can see the different kinds of trees, tall trees, and the trees with its green leaves, and the forest looks a beautiful scenery, and we also attracted in the forest and want to spend our life in the lap of the forest. So in the fifth stanza, the poet C.F. Alexander wants to depict about the rushes and tall trees and also the meadows. So meadows means an open area of grassland where we play. And likewise the rushes by the water. Rushes means one type of hollow stem or one type of a plants like grass. जे एक घास भलिया गोटे लंबा गछ जेमिति दुब घास जेमिति सेमिति गोटे लंबा घास और काइच भलिया गोटे लंबा गछ से व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेट्स एंड बास्केट जहा माध्यम रे की तो आमे जो खेली किबा पाछिया तो ए गुडी सब निर्मित करि तयारी करथाउ. तो इन द फिफ्थ स्टैंजा the C.F. Alexander the poet wants to describe the tall trees in the greenwood. तो आमे जते बेले जंगल को प्रवेश करिबा तो तार जो सुंदर सुंदर जो लंबा गछ गुडी को हमको आकर्षित करथाई ता सहित तार जो सबुज रंगर जो समस्त पत्र गुडी को हमको मुग्ध करथाई. the meadows where we play এবং एक प्रशस्त खेल पड़िया meadows means open area of grassland तो गोटे खुला प्रशस्त घास पड़िया जेउ थारे आमे खेली थाउ. the rushes by the water. Rushes are one type of hollow stem that grows in the water side or near the water side. तो rushes टा होची एक प्रकार तृणमूल जहा कि पानी पाख अंचल की बढ़ी थाए एवं ए गुडी को सब तो कोन तयारी थाए ना खेली किंबा पाछिया सब तयारी थाए नेट्स एंड बास्केट मशीन तयारी थाए. तो वी गैदर द rushes आमे से गुडी को संग्रह करि थाउ काहे कि ना बिकॉज़ we make nets and baskets and sold it in the town to make our or to earn our living. तो किछि लोक अछंती जो माने निम्न स्तर की तो से माने ए सब तृणमूल सब तुली करी तो कोन करंती ना से गुडी सब खेली पाछिया मशीना तयारी करंती और नै के शहर सब बिक्री करंती जहा द्वारा कि सेमान तक जीविका को अर्जन करिथांती जे पैसा से पाइले निजर जीविका से अर्जन करिथांती. तो फॉर दिस रीजन सही कारण जोगु वी गैदर एवरी डे तो सही सब जिनिस हम प्रत्येक दिन संग्रह करि थाउ. तो ही गेव अस आई टू सी देम एंड लिव्स दैट वी माइट टेल हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल. तो इन द सिक्स्थ स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा द पोएट C.F. Alexander wants to depict about the living being or a human. तो यही जो शेष सारांश शेष स्टांजा रे की कवि C.F. Alexander तो एक मनीष को नहीं कि तार विभिन्न अंग को नहीं कि से वर्णना करजंती. तो among our different parts of our body तो C.F. Alexander mainly importance on eyes and lips. तो हमर विभिन्न अंग भितरु तो कवि C.F. Alexander केवल दीटा अंग पर से बेसी गुरुत्व दैजंती. कोन कोन one is eye and the other is lips. गोटा होची आखी এবং out of water. But the several parts of our body has different types of organs. Likewise, God has given us tongue to taste. Likewise, God has given us hand to do something. So mainly among all the parts of our body, C.F. Alexander wants to depict about the eyes and lips. Therefore, the poet C.F. Alexander wants to depict first the eye. God has given us eye to see His beautiful creation. तो भगवान आमको आखि दबार कारण जे भगवान जो सृष्टि करिसन सुंदर सुंदर जिनिस गुडी को आम चतुर्पार्श्व होइछि अराउंड अस. God has created by God. God has created all the things. So for this reason God has given us eyes to see the beauty of His creation. जे भगवान आमको जो आखिटा देइचंती कोन पाई ना तांको जो आम चतुर्पार्श्व जे सब सुंदर सुंदर वस्तु गुडी को जिनिस से सृष्टि करचंती से सब को देखिया पाई God has given us
eyes. Likewise, God has given us lips to praise His creation. ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ଉଠ. But not only praise but also to tell with anybody. ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା ନୁହେଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତ God has given us lips. Without our lips we cannot tell. ଆମେ ଯଦି ଆମଠୁ ଉଠ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଟିକେ ବି we cannot utter a single word. ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ if we have no lips. ଯଦି ଆମଠୁ ଉଠ ନଥାନ୍ତା ତ so God has created the all things as well as us. So we have to do a lot of work in the earth. We are coming to the earth and we have a lot of work to do, and one day we have to return and minus in this soil. तो आमको आम धरा पृष्ठ को आसीचे और आमको बहुत किसी कर्तव्य करने अच्छी और दिन ना दिन तो आमको से फेरी जापाई पड़ो जो आम आसीचे माटी सहित आमको दिन दिन मिसी जापाई पड़ो. सो इन द लास्ट स्टैंजा He means God gave us eyes to see them. भगवान आमको आखि देइचंती एई सब जिनिस को देखिया पई हुची अराउंड अस जेउ गुडी को हम चतुर्पार्श्व अछि and lips that we might tell. एवं उठ आमको देइचंती जा माध्यम रे की तो आमे कथा कहि परछे एवं तांकर सृष्टि रो गुणगान आमे करि परछे. तो how great God Almighty. तो who has created the all things. तो how it is possible, so we can tell. तो सही पे हम कहि परबा how Almighty God is. तो भगवान केते महान. Who has made all these things well. जे कि ए सुंदर जिनिस गुडी को सुंदर भाव रे वर्णन सुंदर भाव तैयारी करछंती एवं देखा पे मत रखियो अत्यंत सुंदर और सौंदर्यपूर्ण. तो C.F. Alexander in her life career तो तांकर जीवन काल भितर की she wrote many poems. से बहुत किसी कविता लिखी चंती. तो among her poem all things bright and beautiful is very famous. तो बहुत कविता मानक मध्यरु तो all things bright and beautiful ये गोटे प्रसिद्ध कविता and it also included for him for children. एवं एई जो कविता टी लिखाई थी पिला मानक स्तुति को आधार करी तो ये कविता टी से लिखी चंती. तो C.F. Alexander means Cecil Francis Alexander was born in Dublin, Ireland in 1818. तो 1818 मसीह की C.F. Alexander जन्म ग्रहण करथिले आयरलैंड रो डुब्लिन शहर की. She is a famous hymn writer and poet. से एकाधरे कवि एवं लेखक मध्य थिले. तो हर फेमस वर्ड्स आर तो बहुत किछि कविता से लिखि चंती. तो कविता मानक मध्यरु तो किछिटा अछि गुरुत्वपूर्ण बा प्रसिद्ध कविता से गुड हमको दिया जाय छै. कोन ना हिम फॉर चिल्ड्रन, क्रिसमस कैरल, वंस इन रॉयल डेविड सिटी, वर्सेस फॉर होली सीजन. तो एई जो कविता गुड को लिखि चंती तो विभिन्न कविता मानक मध्यरु हमको दिया गला चारोटी कविता एवं हम जेटा पढुचे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. दिस poem is also concluded for him for children. Likewise, her works are once in Royal David City, verses for Holy Season, hymn for children, Christmas Carol. तो यही सब कविता गुड मन रखिबो काहे कि ना हमको आसीथिबो जे क्रिसमस कैरल इज रिटन बाय डैश. तो C.F. Alexander काहे कि ना हमें जानले जे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल टा केवल लिखिजन किए C.F. Alexander. तो ता सहित हमको दिया आइथिबो प्रश्न की जे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज रिटन बाय डैश एमति कासी नथिबो. तो हमें तो जानले किंतु हम प्रश्न कोन आसीबो ना मु कहिबा वंस इन ए रॉयल डेविड सिटी इज रिटन बाय डैश. किंतु हम जानि हम बही भीतर नहीं किंतु तांको द्वारा लिखित जो कविता गुडी को आउ चारटा दियाला तो से गुडी हमको मन रखा पई पड़िबो. से चारटा कोन कोन हला ना हर फेमस वर्ड्स आर हिम फॉर चिल्ड्रन, क्रिसमस कैरल, वंस इन रॉयल डेविड सिटी, वर्सेस फॉर होली सीजन. एंड मेनली दिस पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज इंक्लूडेड फॉर हिम फॉर चिल्ड्रन. पिलामान को स्तुति को आधार करी करी ए कविता टी को से लिखि चंती.